Assalamu alaikum guys, this is your teacher Dr. Noor Muhammad and you are watching me on AS level biology lecture series, and this is our week 1 of the lectures, and we are doing right now chapter number 1, that is of cell, and I am combining this chapter with chapter number 4, which is again going to talk about the cell structures, membrane specifically. So we are doing chapter number 1 and 4 in combined topic of cell. In the last lecture we were talking about cell wall. I have explained first the basic aspects of the cell wall, जहाँ पर हमने बायोकेमिकल जहाँ पर हमने जनरल पॉइंट्स डिस्कस किए थे सेल वॉल के, एंड देन उसके बाद फिर we started the discussion on the biochemical composition of the cell wall. Here on my board you can see that what we were discussing in the last lecture was the composition of the cell wall in plants. As I've told you that a cell wall is not only present in plant, but this structure is present in every cell other than animals. So cell wall is there in plants, in fungi, in bacteria. जो तीनों मेजर ग्रुप्स हैं, प्रोकैरियोट का ग्रुप हो गया और प्लांट्स का ग्रुप हो गया, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट में या फंजाई, all these three categories of organisms possess cell wall. So here we have only in the last lecture we only talked about the composition of the cell wall in plants. तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं कि जो प्लांट का सेल वॉल था मेजरली वो 1 2 3 कंपोनेंट्स पे कंसिस्ट करता है. द मोस्ट डोमिनेंट कंपोनेंट वाज सेल्यूलोज. 70 to 80% सेल्यूलोज है, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट. एंड हाउ द सेल्यूलोज इज फॉर्मिंग जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, वो मैंने आपको बताया था कि इट इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज. वो यूनिट्स कंबाइन होते हैं, बीटा ग्लूकोज की चेन्स बनाते हैं. दोज चेन्स आर कंबाइंड फर्दर टू फॉर्म फिब्रिल्स ऑफ सेल्यूलोज, एंड दोज फिब्रिल्स आर कंबाइंड फर्दर टू फॉर्म fibers of cellulose, and finally these fibers are making cell wall. So that was the discussion we did. उसके बाद फिर second जो component था that was pectin. I told you that along with the rigidity, a little bit of flexibility factor is also required. That is provided by pectin, which is the second dominant component, second abundant component, and the least dominant or least जो composition का component है that is actually lignin. And I've told you in the lignin, when we were doing lignin, that lignin is the component which is like a cement. ठीक है ना. और मैंने बताया था कि lignin अगर आ जाएगा, जितना ज़्यादा आएगा तो वो सेल वॉल में जो सेल्यूलोज फाइबर्स हैं उनको ज़्यादा और ज़्यादा स्टेबलाइज और टफ बनाता जाएगा. एंड आई हैव गिवन यू द एग्जांपल ऑफ जाइलम, that whenever you see heavy deposition of lignin, or whenever you see this word lignified cell, for most of the time it means a dead cell, because when lignin is deposited in heavy amounts, what happens is that जो cellulose fibers हैं जिनके दरमियान spaces होती हैं, and those spaces are used in the cellular transport. Because you remember cell wall के बारे में हमने बताया था कि it's a permeable membrane, everything can pass through it. तो जो चीज़ें पास कर सकती हैं due to heavy deposition of lignin, वो सारे जो spaces होते हैं वो बंद हो जाते हैं, and that is why जो transport across the cell है वो रुक जाता है. और जब रुक जाएगा तो obviously cell cannot receive materials and even cannot जो है ना excrete जो उसके products हैं, तो obviously cell की death हो जाती है. तो it may sounds a disadvantage for you guys, but naturally जहाँ पर ये हो रहा है वहाँ पर ये advantage है. For example, मैंने आपको last time ही जाइलम की example दी थी कि जाइलम की example दी थी मैंने आपको कि जाइलम is a natural cell which is a part of vascular bundle, and it is a dead cell because it is heavily lignified, due to which क्या होता है कि जाइलम becomes dead, but it is due to the लिग्निफिकेशन. जो वॉल्स होती हैं, जो सेलुलोज फाइबर्स हैं जाइलम के अंदर, वो बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं. दैट इज़ वाई जाइलम इज़ एक्टिंग लाइक अ पिलर. जैसे आपके घरों में पिलर होता है ना टू सपोर्ट द होल हाउस, इन द सेम वे जाइलम जो बंडल्स होते हैं दे ऑल्सो एक्ट लाइक अ पिलर टू सपोर्ट द होल स्टेम और रूट और वगैरह. ठीक है ना. तो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ द लास्ट लेक्चर. ओके, नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल इन अदर ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया. तो लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ. ठीक है जी. So now we are going to talk about fungi.
that how the cell wall of fungi is made. ठीक है ना, फंगल सेल वॉल कैसे बनी होती है उसकी बात करेंगे. As you all know that fungi is also a multicellular organism, eukaryotic has a complete cell and it also contains cell wall. ठीक है. Now fungal cell wall में जो पहला कंपोनेंट है it's or the dominant component, it's not a carbohydrate, it's a protein. And what that protein is called? Chitin or chitin, whatever you pronounce, that's totally up to you. Chitin or chitin. फंगल सेल वॉल का जो डोमिनेंट कंपोनेंट है वो है प्रोटीन, काइटिन और चिटिन. ठीक है, प्रोटीन, काइटिन और चिटिन इज अ डोमिनेंट कंपोनेंट. मेन कंपोनेंट है. ठीक है जी. द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज in fungi is a protein called chitin. ठीक है. Why the chitin is there? Why cellulose अभी आपको डोमिनेंट कंपोनेंट के तौर पर नजर नहीं आ रहा फंजाई के अंदर? बिकॉज फंजाई को अपनी बॉडी में इंटरनल फ्रेमवर्क उतना उस तरह का नहीं चाहिए जैसे प्लांट को चाहिए था. प्लांट ह्यूज होता है तो प्लांट रिक्वायर्स लॉट ऑफ फ्रेमवर्क और स्केलेटल सपोर्ट चाहिए. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सेलुलोज नजर आ रहा है सेल के अंदर. ठीक है, जो कि रफ एंड टफ स्ट्रक्चर है एज कम्पेयर टू सेलुलोज. प्रोटीन जो होता है वो उतना टफ स्ट्रक्चर नहीं है. तो दैट इज़ वाई यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेम अलॉन्ग विद जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी होगा. बट द सेकेंड कंपोनेंट इज कार्बोहाइड्रेट हेयर ऑल्सो. ठीक है, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल इज अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल हेयर. And we call that carbohydrate fungal cellulose. It is not the same cellulose. It is not the same cellulose जो कि फंजाई जो कि प्लांट में था. एक्चुअली प्लांट में अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि सेलुलोज जो है वहाँ वो बीटा ग्लूकोज से बना होता है. यहाँ पर जो फंगल सेलुलोज होता है इसकी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू प्लांट वाले सेलुलोज के. और वो क्या डिफरेंसेस होते हैं दैट्स नॉट द डिस्कशन एट दिस लेवल. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट दिस इज द सेलुलोज विच इज नॉट exactly similar to the plant cellulose. That is why we do not just say cellulose because वो cellulose जो है ना प्लांट के लिए ज़्यादा बोला जाता है. तो it is a cellulose structure with a little bit of changes and that is why we call it fungal cellulose. And this cellulose is not that supportive or not that rigid. As I've told you that fungi also do not require that much hardness or that much rigidity. So that is why they have fungal cellulose. So fungi का जो composition है bacterial cell wall का that is on protein and carbohydrate again. Plant में भी यही था protein और carbohydrate, but वहाँ पर carbohydrate was the dominant component and protein was the second constituent. Whereas यहाँ पर chitin or chitin is the main component, the dominant component, and carbohydrate is there, which is fungal cellulose, and it's a cellulose that is different. It's a cellulose that is different from the cellulose that was in plants. ठीक है ना. ये हो गई fungal cell wall की composition. उसके बाद the third organism which we have to talk about is are bacterias. Remember we talked about them that they are prokaryotes, and even they don't have complete cell, but still they possess cell wall in their cell. ठीक है ना. अब बैक्टीरिया चूंकि फंजाई से भी बहुत छोटा है क्योंकि इट इज नॉट इवन अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इट इज अ प्रोकैरियोट. सेल एक है वो भी कंप्लीट नहीं है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. तो डेफिनेटली चूंकि इट्स अ स्मॉल सेल तो इसके सेल वॉल में बहुत ज़्यादा रिजिडिटी रिक्वायर्ड ही नहीं है. ठीक है, लाइक फंजाई, लाइक प्लांट्स. ठीक है, बट बहरहाल सेल की जो शेप है उसको मेंटेन करना ज़रूरी था. दैट इज़ वाई सेल वॉल नेचर हैज़ गिफ्टेड दिस ऑर्गेनिज्म विद द सेल वॉल. सो द सेल वॉल हेयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, सॉरी नॉट सेलुलोज एंड पैक्टिन, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. बट जैसे यहाँ पर हमने देखा कि प्रोटीन का एक अलग मॉलिक्यूल था, कार्बोहाइड्रेट का अलग मॉलिक्यूल था. इवन प्लांट्स में हमने देखा कि प्रोटीन का अलग मॉलिक्यूल था, कार्बोहाइड्रेट का अलग मॉलिक्यूल था. लेकिन यहाँ पर रादर देन हैविंग टू सेपरेट मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इतनी तो जगह ही नहीं है ना. तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है. ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ
conjugated molecule. What is conjugated molecule? It's a molecule which is a combination of two types of substances. यहाँ पर क्या था, दो types of substances हैं लेकिन अलग अलग हैं. प्लांट्स में भी क्या था, दो types of substances थे लेकिन अलग अलग थे. हम एनिमल में क्या देखते हैं, सॉरी बैक्टीरिया में क्या देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, दे आर देयर बट दे आर नॉट एज अ सेपरेट कंपाउंड्स, दे आर कॉन्जुगेटेड, दे टुगेदर फॉर्म अ कंपाउंड एंड दैट इज peptidoglycan. Peptidoglycan is the compound. Here the word peptido is representing the protein part of the molecule and the word glycan is representing the carbohydrate part. So here you can also see that composition is of protein and carbohydrate, but the difference is that rather than having a separate compound of protein, a separate compound of carbohydrate, what we see is a combined conjugated structure or conjugated molecule, and that molecule is peptidoglycan. So that's how. अच्छा, वायरस की अगर बात करें तो वो तो सेल ही नहीं है, तो उसमें सेल वॉल का कोई सवाल ही नहीं होता. एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल. सो राइट नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट जितने ऑर्गेनिजम्स में भी सेल वॉल होती है, वी हैव जस्ट टेकन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि उनमें जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, बायोकेमिकली कैसे बनी हुई होती है. तो आई होप कि आपको प्लांट का भी समझ में आ गया. कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, यहाँ पर भी कार्बोहाइड्रेट, फंजाई और प्रोटीन है, फंजाई में भी, और इवन बैक्टीरिया के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही का कॉम्बिनेशन हमें नजर आता है. जस्ट क्विकली नोट दीज पॉइंट्स एंड देन इंशाल्लाह फिर हम आगे चलेंगे. Okay guys, you must have noted down these points. Let's talk about some of the remaining aspects of cell wall. Now let's get back to the plants. ठीक है जी. तो what I have told you about plant cell wall, remember? Quickly मैं लिख देता हूँ. That cell wall is made up of cellulose as a dominant component, pectin as a second constituent, and lignin as the third constituent. Okay. अब मजे की बात यह है कि लेट्स सी, मैं आपके सामने अगर प्लांट का एक सेल बनाऊं, दो सेल बना देते हैं. लेट्स से कि ये दो प्लांट सेल्स हैं, ठीक है ना, ये दो अदर प्लांट सेल्स हैं, ठीक है जी. सो हाउ एग्जैक्टली द सेल वॉल लुक्स लाइक अंडर माइक्रोस्कोप ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जब हम सेल मेम्ब्रेन में जाएंगे इसके बाद, तो वहां पर जो पहला कॉन्सेप्ट है ना वो है इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो मैं आप बताने जा रहा हूँ इसकी डिस्कशन होती है कि सेल वॉल को जब हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट दैट you should remember that it is a rough, tough, rigid and thick structure, and due to the thickness, when you observe a cell wall under microscope, so what you see is you observe cell wall as a thick layer and actually you see it like this. You see it like a double layered wall.
you see it like a double layer wall, and actually this is not although discussed in your syllabus, but actually the fact is that cell wall, when is observed under high magnification, it is made up of 3 layers. It is made up of 3 layers. Yes, it is made up of 3 layers. Which are, what are those 3 layers? Let me write it here. Primary layer, then we have secondary layer, and then we have middle layer. ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड मिडल. इट्स लाइक, अच्छा, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दैट एग्जैक्टली, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू बिकॉज जब सेल मेम्ब्रेन में हम बात करेंगे तो वहां पर ये पॉइंट काफी ज्यादा काउंट करेगा. तो रिमेंबर, व्हेन यू ऑब्जर्व सेल वॉल अंडर माइक्रोस्कोप, ड्यू टू इट्स थिकनेस एंड ड्यू टू इट्स लेयर पैटर्न, इट अपीयर्स एज अ थिक double layered membrane, although it is a triple layered membrane, but you can see 2 layers, and that is why it's really important कि जब आपके एग्जाम प्रैक्टिकल में जब सेल वॉल आप ड्रॉ कर रहे हो, तो रिमेंबर, बच्चे बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं. वो क्या करते हैं, आउटर वाले को सेल वॉल लेबल कर देते हैं, इनर वाले को सेल मेम्ब्रेन लेबल कर देते हैं. दैट्स टोटली रॉन्ग. या आप आउटर वाले को सेल वॉल और इनर वाले को सेल मेम्ब्रेन लेबल नहीं कर सकते, बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज सो थिन दैट इट इज नॉट विजिबल इवन अंडर लो मैग्निफिकेशन अंडर द माइक्रोस्कोप. ठीक है ना. तो जो वॉल आपको नजर आ रही है, वो दोनों ही जो पूरी वॉल्स है वो सेल वॉल है. ठीक है. इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप उसको लेबल एज अ सेल वॉल ही करो, लाइक दिस. यू कैन लेबल इट लाइक दिस. ठीक है. या आप यहां से भी एरो बना सकते हो, मर्जी आपकी. ठीक है ना. सेल वॉल है ये दोनों स्ट्रक्चर्स को आप क्या लेबल करोगे कि ये सेल वॉल हैं. ठीक है. दूसरी चीज कि जब सेल वॉल फॉर्म हो रही होती है बेटा, तो बाय डिफॉल्ट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, जब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सेलुलोज फाइबर्स जो होते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस होते हैं जिसमें से चीजें रन कर सकती हैं, बट लिग्निन जैसे जैसे डिपॉजिट होता है वो स्पेसेस भर जाती हैं. तो व्हाट हैपेंस इज दैट देयर आर मल्टीपल पॉइंट्स वेयर लिग्निन की डिपोजिशन नहीं हो पाती, या वी कैन से दैट इनकम्प्लीट डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एट दोज पॉइंट्स. Incomplete deposition of lignin at those points, and when lignin is not deposited there, तो वहां पर wide spaces खुल जाती हैं जो आपको यहां पर नजर आ रही हैं. ठीक है जी. ये वाइड स्पेसेस खुल जाती हैं जो आपको यहां पर नजर आ रही हैं. एक स्पोर्स बन जाते हैं, कम्युनिकेटिंग विंडोज बन जाती हैं, एंड दीज कम्युनिकेटिंग विंडोज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किस चीज में, अभी आपको समझ में आ जाएगा. दीज आर कॉल्ड plasmodesmators. What I have just told you, that when the cell wall is forming, by default there, due to incomplete deposition of the components of the cell wall, which is lignin, pectin and cellulose, spaces are left between two cells. जो उनके दरमियान सेल वॉल है, उनके दरमियान स्पेसेस रह जाती हैं, एंड दोज स्पेसेस की वजह से वहां जो एक लिंक क्रिएट होता है, एक पोर क्रिएट हो जाता है, एक कम्युनिकेटिंग विंडो क्रिएट हो जाता है, दैट आर कॉल्ड plasmosomes or plasmodesmators. And what is the role of or importance of plasmodesmators? That these are the plasmodesmators which are responsible for the communication between two cells, transport of materials from one cell to another. ठीक है. When you want to transport rapidly the substance from one cell to another cell, there are lot of ways. We will study that in transport in plant chapter number 7 जब हम पढ़ेंगे तो हम उसकी बात करेंगे. But for now I just want to tell you that there are many ways. Symplastic way of transport, apoplastic way of transport. ठीक है ना. So when this particular path is failed, then जो plasmodesmators होते हैं, they play their role and they quickly transport substances from one cell to another. Directly जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है एक सेल से दूसरे सेल के अंदर. तो plasmodesmators की इंपॉर्टेंस क्या है कि plasmodesmators are responsible to transport substances from one cell to another cell.
ठीक है, is that clear? So this is the last part that we had to discuss about cell wall. I think we are clear up till now. That let me repeat this, कि plants के अंदर जब cell wall form हो रही होती है, तो during the formation of cell wall, what we see is during the formation of cell wall, what we observe that due to incomplete deposition of the constituents of the cell wall, there are spaces which are left, and those spaces are called, which are left, are called plasmodesmatous, and those spaces now has to play their role as a communicating windows between two cells. ठीक है जी, तो they communicate, they are the source of, or they are the way of transporting or talking to each other by the cells. ठीक है, और rapidly transporting substances. और जब आप transport in plants पढ़ेंगे तो you will learn at there that there's a time जहाँ पर symplastic transport रुक जाती है. What is symplastic transport? उसी टाइम के लिए रहने देते हैं, तो उस वक्त फिर यही वाली ट्रांसपोर्ट काम आती है जब कि प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो सब्सटेंसेस मूव करना शुरू कर देते हैं. So that's all about cell wall, and that's the end of cell wall. We have I tried my level best to cover cell wall at its best, and आपको उम्मीद है कि सेल वॉल के जनरल फीचर्स, सेल वॉल के बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन, सेल वॉल के प्लाज्मोडेस्माटा, एवरी सिंगल एस्पेक्ट इज क्वाइट क्लियर इन योर माइंड. नाउ, like always, I'll show you a short video presentation about cell wall, and in that video presentation you will see all these concepts in animated version, and उसके बाद फिर जो है वो हम आपको आगे लेके जाएंगे. So let's quickly watch the video now. Today I am going to discuss about cell wall. A cell wall is a structural layer surrounding some types of cells, just outside the cell membrane. It can be tough, flexible, and sometimes rigid. And obviously, cell wall is absent in animal cell. This is a diagram of cell. Primary cell wall. Secondary cell wall. Plasma membrane. Plasmodesmata. Middle lamella. Nucleus. Vacuole. Now this one is diagram of cell wall. Primary cell wall. Secondary cell wall. Middle lamella. There are three layers in a cell wall. Middle lamella. Primary cell wall. Secondary cell wall. This is another diagram of cell wall consisting three layers. Middle lamella. Primary cell wall. Secondary cell wall. Now I will discuss about the structure of cell wall. Middle lamella. During cytokinesis the formation of cell wall begins. Initially pectose particles in the name of phragmoplast are being deposited, and these particles coalesce to each other, forms a thin cell plate. Due to physical and chemical changes the cell plate converted to middle lamella. The middle lamella is the common layer between two cells. Primary cell wall. On the middle lamella, by the deposition of cellulose, hemicellulose, and glycoprotein, a thin layer of 1 to 3 micrometer thickness is formed. This is primary cell wall. Secondary cell wall. Another layer named secondary cell wall develops on the primary wall. Generally, it occurs after full maturation of the cell. This layer is thicker, generally cellulose, and lignin is deposited on it. Function of cell wall. Gives mechanical strength of the cells. Protects the inner living active material from the external pressure. Transportation, absorption of mineral salts and water are also carried out by the cell wall. Protects the plasma membrane. Prevents the osmotic bursting of cell wall. All living things are composed of cells. They are the building blocks of all life. Cells come in many different shapes and have different functions. Plant and animal cells are different too. The main difference between plant and animal cells is that plant cells have a cell wall on the outer layer, whereas animal cells only have a cell membrane. The cell wall is a protective layer outside the cell membrane that also provides support for the cell's structure. The cell wall gives the plant its actual shape. It acts as a gatekeeper because it determines what can come in and out of the cell in order to keep the cell protected. It is kind of like the outside bricks of a castle, only
As you will learn as you listen on, there are holes throughout this castle. Those holes do make the cell vulnerable, but they are important to the function of the cell. A redwood tree and a dandelion both have cell walls on the outside of all of their cells. The cell walls are there to give the plants their shape and support. However, the cell walls act and are constructed a little different to meet the needs of the particular plant. For instance, a 100-foot redwood tree needs a very strong and rigid plant cell wall so that it can grow to its great height and not fall over in the wind. On the other hand, a little yellow dandelion out in the field needs to have more plasticity so that it can bend, not break, as the wind blows through the field. Have you ever forgotten to water the flowers? They may not be able to talk, but they will let you know when they're thirsty as they begin to droop over. Their shape is still being maintained by the cell wall so that as soon as you water the plant, it can pick itself back up again. On the other hand, if you water too much, the cell wall also makes sure that the cell does not burst. It protects the cell from overexpansion. The cell wall protects the plant and cells from the many insects and pathogens that could harm the plant. But the cell wall still has its vulnerable areas. There are holes all over the cell wall called plasmodesmata. These are holes that allow for nutrients to enter the cell as well as waste to exit the cell. These small holes can cause the cell to lose water, and this is when the plant will start to droop. But as soon as the plant can get a drink, it will bounce right back up to its proper shape. Here is a list of the basic plant cell wall functions. Provide support and limited plasticity. Prevent loss of water. Protection from insects and pathogens. Filter. Prevent overexpansion caused by too much water. Keep the shape of the plant. Allow plants to grow to great heights. The plant cell wall is composed of cellulose. Cellulose is a structural carbohydrate and is considered a complex sugar because it is used in both protection and structure. The plant cell wall consists of 3 layers. Each layer has its own unique structure and function. The layers may vary depending on the type of plant and its needs. The top layer is the strangely named middle lamella. This outer layer is shared by neighboring cells, and it connects the cells together to form a strong structure. It is also very flexible. The middle lamella is rich in pectins, which help to strengthen the plant and give it the ability to resist compression. They also contain enzymes that help to break down the cell wall, allowing the plant to change its structure. This process is important when fruit is ripening. The primary wall is the next layer. It is composed of cellulose in the form of microfibrils. These cellulose microfibrils weave together with glycans, increasing the strength of the cellulose. Pectins can also be found in the primary cell wall. With all of this strength, you would think nothing could squish a dandelion. The third and final layer is the secondary wall. This layer is extremely rigid and provides compression strength. It helps stop the plant from getting squished. The secondary wall has a very similar composition as the primary wall, only it has more stuff in it. It contains lignin, which is very hard and has considerable strength. The secondary wall also protects the plant from invading bacteria or fungi. A plant cell wall is constructed around the outside of the cell to give plants a strong and protective outer layer. The cell wall can be divided into 3 layers, each of which is made for strength and protection. These layers and their compositions not only protect the cell, but allow for the cell to function. The 3 layers are the middle lamella, the primary wall, and the secondary wall. There are passageways for nutrients to enter and waste to leave. The plant cell wall is unique to plants and plays many vital roles to making plants what they are.